नमस्कार. मी श्री सुक्त म्हणते आहे. ज्या वेळेला आपल्याला म्हणायचं असतं त्यावेळेला आपल्याला सापडत नाही, म्हणून मग मी म्हणते माझ्या चॅनलला सर्च केलं की श्री सुक्तम येऊन जाईल. आतापर्यंत आपण व्यंकटेश स्तोत्र बघितलं, दासबोध बघतो आहोत. दासबोधाचा एक समास झालाय, पहिला, दुसरा झालाय. श्री सुक्तम. हरि ओम. हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णम रजतश्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यशां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वारथमध्या हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीमार्देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सितां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेन्वश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति सवरुक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपेतु मां देवसखा कीर्तिश्रमणिना सह प्रादुर्भूतो सुरास्तेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धधारा दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिषिणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यश्च मयि श्रीशयतायशा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपत्सृजन्तु सिद्धानि चिक्लित वसमे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह आर्द्रां यक्कर्णीयष्टि स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यशां हिरण्यं प्रभुतं गावो दाशोश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकाम सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्य लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे लभता देवी सर्वकामांश देहि मे पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि सन्निधस्त्वं पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्व दिगवे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्निर्धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पति वरुणं धनमस्सु मे वैनतेय सोमं पिब रुद्रः सोमं दर्श सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नी क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीप्रिय सखीं देवी नमाम्यच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यं विधाचवमान् महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु इति श्रीसूक्तं समाप्तम्.